Hello, good afternoon. Hello. Chalo. Is the audio video clear? Before beginning, let me know if the audio video is clear. Chalo. We had discussed the Odisha history, some of the questions of Odisha history in the last class, right? The last powerhouse series re ame kichira Odisha history discussion karitile. Today we will be moving to the second part of this particular session. Second part of the session re last class re we had done around 13 questions from Odisha history. Aji out के questions देखिबा. We will give a substantial clarity of the entire Odisha history जति भी part आमर syllabus रे अछि तारो पूरा entire coverage माने beginning from the ancient to taking from the modern पूरा entire coverage एई particular दीटा classes रे I have tried to cover. Baki there are many more questions which will be coming in the henceforth sessions. We will discuss all of the questions, but today we will discuss some of the most important questions. As you all know, this session has been a particularly analytical session. तो किसी objective questions भी मुने क्या से भी in the next session. एटा टिके analytical session चलची तो ए दीटा part रे I have tried to include more of the analytical part जो उतरे की तुमको idea लगी जीवो. ओडिशा history रे जेतबे हमें questions करिबा केमिति से segment रे question करिके आरंभ करिबा, right? Good. So these questions have been discussed, right? तो एबे हमें next को पढ़ेबा. We will move to the 13th 14th question. नहीं कि last class रे हमें 13टा question करिथिले land grants of Eastern Ganga एटा कर देथिले. Today we will start with the 14th question. Just give me 1 minute. Okay, just a second. Okay. So good. Chalo. So moving forward, this is the 14 number question. Consider the following statements about Buddhism in Odisha. Rise of Buddhism in Odisha was very ancient. आमे आगरू जाने छे. Rise of Buddhism आगरू ही ओडिशा रे बहुत ही पॉपुलर थिला, राइट? तो से हिसाब रे कोन बहुत सारा केव्स डिनोट करा हेची बुद्धिज्म पई ओडिशा रे. The Ratnagiri, Lalitagiri and Udaygiri, all of these three caves have been important. नहीं कि Ratnagiri, Lalitagiri and Udaygiri, which are also called as the Diamond Triangle of Odisha. Diamond Triangle of Odisha भी कहा जाए. Okay नहीं? So these are some of the important caves. एति की basic fundamental हमें जानी चाहिए. Just 1 minute. I will see if the session has been shared. Okay. Good second bus. ठीक ठीक. चलो. So beginning with the question. एति की basic fundamental हमें जानी चाहिए. Then we will try to attempt the question. कौन? Ratnagiri and Lalitagiri were important centers. Yes, we all know that. जेमते हमें कहले Diamond Triangle रे we have discussed about the Diamond Triangle. तो Ratnagiri and Lalitagiri are definitely important centers there. तो first statement टा सेमती ही ठीक है जीवो. Now the second question is asking Vajrayana influence was present in Odisha. Vajrayana influence present थिला ना नहीं. If you are discussing about the Buddhism विषय जदि हमें टिके बेसिक फंडामेंटल देखिबा को जिबा ताले कोन Buddhism had two different sects जोडा कि बहुत ही important. One is your Mahayana sect, right, and the other is your Hinayana sect. Correct? Mahayana sect and the Hinayana sect. दीटा important sects थिले. अब ये दीटा important sects रो division टा हमें generally पढ़ू history रे. Correct?
तो ए दीटा इंपोर्टेंट सेक्ट भितरे वज्रायन सेक्ट कोटा वज्रायन सेक्ट डेवलप्ड इन दी लेटर पार्ट ऑफ हिस्ट्री जदि हम देखिबा ताले वज्रायन सेक्ट भी गोटे सेक्ट डेवलप हेतिला जोटा कि नियरली सेही 3rd century AD 4th century AD एंड इन एंड आउट मिडिएवल इंडिया जतल स्टार्ट हला हला द 7th century AD सेतळकु वज्रायनटा पीक रे पहुंचला 7th century AD करेक्ट वज्रायनटा पीक रे पहुंचला if we are discussing about the Vajrayana sect ताले वज्रायन सेक्ट बेसिकली कोन इट इज कॉल्ड एज द तांत्रिक बुद्धिज्म बोली कहा जाए करेक्ट तांत्रिक बुद्धिज्म बोली कहा जाए ता माने कोन जो मैजिकल पावर्स ऑफ बुद्ध तमे देखुछो सेही दिनसटा को वज्रायन बुद्धिज्म बोली कहा जाए इज दैट क्लियर ओके तो वज्रायन बुद्धिज्म 3rd सेक्ट बोली वज्रायन बुद्धिज्म तो ये जो तांत्रिक बुद्धिज्म एटा को बेले बेले कोन मैजिकल पावर सहित भी लिंक करा जाए तो ये जो मैजिकल पावर सहित लिंक करा जाए ए दिनसटा केबे राइज करथिला जते बेले बुद्धिज्म बहुत पॉपुलर हेतिला सेते बेले राइज करथिला ना एठी हम पाखरे कोन एविडेंस अछि जे एई भितरु ओडिसा भितरे वज्रायन बुद्धिज्म थिला ना नाही ए जो तीनटा जगह सेंटर अछि ता भितरे ए जो रत्नगिरी अछि रत्नगिरी रे we have some of the evidences माने कोन the lama of Tibet दलाई लामा जो आमे कहउचे तारानाथ कर गोटे बही रे he has mentioned that जो तांत्रिक बुद्धिज्म थिला एंड ए तांत्रिक बुद्धिज्म रो स्प्रेड ता कोठु बिगिन हेतिला ए रत्नगिरी रो बिगिन हेतिला इन 1600 AD the book was published and that book has written कि ए जो तांत्रिक बुद्धिज्म ता एउठु ही जनरेट हेतिला रत्नगिरी रो ता माने कोन तांत्रिक बुद्धिज्म जदि रत्नगिरी रो जनरेट हेतिला वज्रायन बुद्धिज्म ओडिसा रे थिला ना नाही इट इज नॉट टेलिंग अस अ स्पेसिफिक टाइम देछि कि टाइम तो देनी ये खाली बेसिकली कहउची कोन वज्रायन इन्फ्लुएंस वाज प्रेजेंट यस दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू करेक्ट द दलाई लामा तारानाथ हैड रिटन इन हिज बुक कि एउटू स्टार्ट हेतिला तो ही स्टेटमेंट भी ठीक हबो ना बुद्धिज्म डिसअपीयर्ड कंप्लीटली आफ्टर द 8th century AD 8th century AD पूरा कंप्लीटली डिसअपीयर हेतिला जतबे स्टेटमेंट लिखुची कंप्लीटली डेफिनेटली एटा भूल हबो काहे ना बुद्धिज्म रो एविडेंसेस एबे भी टिके ट्रेसेस रे अछि एबे भी पूरा एंटायरली बुद्धिज्म पळे जाईची बोली कहि परिबानी डिक्लाइन हे गला लोप पाई जाईची किंतु पूरा एंटायरली वैनिश हे जाईची से वाला स्टेटमेंट तो सेमिति ही हमें एटा एक्सट्रीमिस्ट स्टेटमेंट जेहेतु डायरेक्टली ही कैंसिल करबा देन तार फंडामेंटल ता कोन एठी बुद्धिज्म जोटा राइज करथला ओडिसा रे अप टू द 12th century AD वी सी द एक्जिस्टेंस ऑफ बुद्धिज्म ता माने 12th century AD पर्यंत बुद्धिज्म रो ग्रोथ अछि बिकॉज़ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द भौमकर टाइम रे भी से माने बुद्धिज्म को पैट्रोनेज दोथले भौमकर परे सोमवंशी रूलर्स नो डाउट दे promoted more and more Vaishnavism and Shaivism तापरे धीरे धीरे हमें डिक्लाइन हवा देखुचे बट धीरे धीरे जो डिक्लाइन हबो सेटा नियरली 12th century 13th century AD परे परे तमे जनरली तार कंप्लीट डिक्लाइन ता देखिबो तो एते पर्यंत मिनिमम बुद्धिज्म ता ओडिसा रे अछि तो एडु कोन हे गेला आंसर क्लियर तीनटा दिन से बुझिला नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन correct question number 15 regarding trade in ancient Kalinga Odisha consider the following statements trade जदि हमें consider करिबा ताले ओडिसा रे we had some of the important ports थिला बेंगल रे the most important port was ताम्रालिप्ति ठीक जोटा कि सबटो important port थिला ओडिसा रे भी we had important ports such as the माणिकपाटना port खड़कपाटना port करेक्ट बालेश्वर गोटे पोर्ट थिला एंड देन वी आल्सो फाइंड इन माने तमरो जो परवर्ती पर्याय गजपति पाखापाखी जो चिलिका परे परे वी आल्सो फाइंड अ पोर्ट देयर तो इन एंड आउट देयर आर 4 इंपोर्टेंट पोर्ट्स इन ओडिसा ता भितर ए दीटा इंपोर्टेंट पोर्ट विषय हमें बेसी डिस्कशन करू माणिकपाटना पोर्ट चिलिका तमरो गंजाम साइड रो पोर्ट दैट इज द माणिकपाटना पोर्ट ए दीटा इंपोर्टेंट पोर्ट हमें डिस्कस करू देन ports facilitated links with Sri Lanka and Southeast Asia this is a basic fundamental fact माने if you see the Indian territory एडी तमरो श्रीलंका अछि if this is श्रीलंका जदी ओडिसा रो समस्त ट्रेड पे बाहर थबे the closest is श्रीलंका अरे श्रीलंका टा क्लोजेस्ट ना नहीं तो एठी तो डेफिनेटली सेवन ट्रेड करथबे ता सहित एमाने लाओस कैम्बोडिया इंडोनेशिया एमान को संगे भी ट्रेड करथबे जावा सुमात्रा आइलैंड सहित तो दिस स्टेटमेंट इज बेसिकली फंडामेंटल स्टेटमेंट आ ये स्टेटमेंट टा ट्रू हबो ही करेक्ट मगर नियर नेबर्स ना तो सेतरे भूल होबार किछि चांसेस ही नहीं रोमन कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन द रीजन यस माणिकपाटना रे आमे जतबे साधव पो मानकर ट्रेडिशन देखुचे साधवस ए जो साधवस माने ट्रेड करूथले वी हैव फाउंड रोमन कॉइन्स फ्रॉम हियर आल्सो करेक्ट तो रोमन कॉइन्स एठी भी हमको अवेलेबल अछि ता माने कोन एंशिएंट ओडिसा रोमन सहित भी ट्रेड करूथले ता सहित कोणार्क रे जतमे देखिबो सम ऑफ द स्क्रिप्चर्स
or the sculptures in the rock art architecture of Konark. They also mention the images of Egypt ro camel आ तांगर pyramids रो माने images भी हम पाखरे मेंशन हेके अछि ता माने ओडिसा रो ancient trade link आरडी बनर्जी mentions that ओडिसा रो ancient trade link Egypt पर्यंत यूरोप पर्यंत भी जाउतला तो ओडिसा रो लोक माने सेतब संगे तांका संगे भी ट्रेड करूथले and this statement is also true. Maritime trade began only in the Gupta period. Only जेतबेले देखिला again this statement is false. Gupta period जदि हमें देखिबा गुप्ता पीरियड केते रु केते अरे गुप्ता पीरियड केते रु केते 320 रु 550 गुप्ता पीरियड आगुरु भी आरंभ होइछ हला गुप्ता पीरियड स्टार्ट हेछि 270 एडी पाखा पाखी एक क्वेश्चन एक कंफ्यूजन ता सब पिलांको जनरली हुए व्हेन आई राइट द 320 एडी गुप्ता हैज स्टार्टेड फ्रॉम 278 माने श्री गुप्ता पाखरु सेरा स्टार्ट होछि 270 एडी पाखरु बट हमें कंसीडर करते 320 काहे के गुप्ता गोटे एमिनेंट फेज को आसीबो सेत पे हमें 320 कंसीडर करछे बट बराबर द कंडीशन इज ए माने कोन गुप्ता का टाइम रे ही ट्रेड करे आरंभ कले कि नाही काहे कि ना मौर्यन एम्पायर जेतोले थिला अशोकंकर कलिंग ऊपर अटैक करबार गोटे बेसिक रीजन भी थिला जे अशोक ओडिसा रो ट्रेड एंड कॉमर्स ऊपर कब्जा करबा को चेष्टा करथिले तो मौर्यंस माने कोठी अछंती 321 बीसी सेतल को ही ओडिसा रो ट्रेड रूट स्ट्रांग अछि तो एठी ओनली गुप्ता पीरियड स्टेटमेंट ता कोन हे जिवो फॉल्स राइट तो स्टेटमेंट कोनटा ठीक अछि आंसर सब जनरली 1 एंड 2 रे अछि तो इजीली गेस करिया को भी तुमको सुविधा हे जिवो जे सब क्वेश्चंस रो प्राय अछि बट देन सब स्टेटमेंट एनालिसिस एत पे करा होछि जे वी आर टचिंग 2 to 3 पॉइंट्स टुगेदर जे कोन कोन दिनस इन्वॉल्व हे के अछि आ को दिनस ऊपर क्वेश्चन बेसिकली तुमको टर्मोइल करि परिबो से दिनस आमे देखुचे राइट क्वेश्चन नंबर 16 अगेन कम्स अबाउट खारबळ को विषय आगुर भी डिस्कस करछे तो ए क्वेश्चन टा इजी हे जिवो इफ यू हैव बीन इन द लास्ट क्लास तो ए क्वेश्चन टा तम पे इजी हे जिवो he repaired the city gates and irrigation canals last class रे ही मु कहितली तनसुळा रोड रो कलिंग नगरी जो कैनल थिला ताको रिपेयर करा हेतला which was built by महापद्मनंद तो ए स्टेटमेंट ता ठीक हे जिवो ता सहित हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन if you are not there in the last class ताल तम पे बुझे भी दोची हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन रे स्पेशली मेंशन करा होची कोन इन द फर्स्ट ईयर ऑफ रूल ऑफ खारबळ he repaired the city gates and टाउन रो बिल्डिंग्स किछटा रिपेयर करा हेछि बोली एठी लेखा हेछि फर्स्ट ईयर द रूल जो माने जो वर्ष खारबळ क्राउन करा हले सेही वर्ष रे ही तांकर फर्स्ट रिपेयर एक्टिविटीज नेले सेकंड ईयर रे से वॉरफेयर एक्टिविटीज को गले तो ए स्टेटमेंट ठीक अछि ही पैटर्नाइज्ड जैन मॉन्क्स यस डेफिनेटली दैट इज व्हाई ही बिल्ट द उदयगिरी केव्स एंड उदयगिरी केव्स रे जैन मॉन्क्स मानक पई कोन स्टेइंग प्लेसेस रिसाइडिंग प्लेसेस शेल्टर्स फूड ए सब दिनसर सप्लाई भी से करे दोथले देन ही क्लेम टू हैव ब्रॉट बैक एन आइडल टेकन बाय द नंदस दिस स्टेटमेंट वाज आल्सो डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास महापद्मनंद कलिंग जीना रो इमेज नै की जाइथिले व्हिच वाज द इमेज ऑफ ऋषभनाथ नै की एटा ऋषभनाथ का इमेज थिबो ऋषभनाथ वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म क्लियर तो एटा ये बृहस्पति मित्र को हरै की डिफीटेड बृहस्पति मित्र एंड took back the throne. Brihaspati Mitra is also called as Bahasati Mitra. Right? Either Bahasati Mitra पढ़िथिबो नाले Brihaspati Mitra पढ़िथिबो तमे in the books. Right? तो ए तीनटा एक स्टेटमेंट कोन अछि all of the three statements are true. अरे बुझी होछि ना नहीं correct next consider the following statements about religious syncretism आगुरो भी बुझै छी या मानेटा syncretism माने कोन amalgamation intermingling of various religion right amalgamation जोटी बहुत सारा रिलीजियन इंटरमिंगल कर जानते सेटा को हमें रिलीजियस सिंक्रेटिज्म कहि जाऊ माने सिंक्रोनाइज होई के आसुचंती बहुत सारा रिलीजियन सिंक्रोनाइज होई के आसुचंती दैट इज व्हाट शैव वैष्णव एंड शक्ति ट्रेडिशंस एटा शक्त कल्ट जोड़ा को जाए शक्ति ट्रेडिशंस कोएक्सिस्टेड यस काहे की कोएक्सिस्टेड हमें बिरजा देवी देखुचे बिरजा देवी रो ट्रांजैक्शन देखो माने ए जो बिरजा देवी बिरजा टेंपल विमला टेंपल इज देयर इनसाइड द जगन्नाथ बाउंड्रीज एटा भी हमें देखुचे देन जगन्नाथ टेंपल जगन्नाथ इज कंसीडर्ड टू बी दी अवतार ऑफ विष्णु का संगे कंसीडर करा होजे विष्णु और कृष्ण लॉर्ड कृष्ण जगन्नाथ बलभद्र ए मान सब अछन ना तो कृष्ण बलराम जेमति थिले सेमिति ही ए माने कंसीडर करा होचंती तो दैट इज आल्सो देयर विष्णु ट्रेडिशंस इज आल्सो शैव बलभद्र इज कंसीडर्ड टू बी ए फॉर्म ऑफ शिव तो बलभद्रଙ୍କ एक्जिस्टेंस रे हमें कोन देखुचे सी गोटे शिवंकर फॉर्म बोली हमें देखुचे तो जगन्नाथ मंदिर रे ही एंटायरली यू विल फाइंड 14 डिफरेंट श्राइन्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा तो दैट इज व्हाई ऑल ऑफ द थ्री ट्रेडिशंस आर देयर और नॉट डेफिनेटली देयर
जगन्नाथ वाज आइडेंटिफाइड विथ मल्टीपल फेथ ट्रेडिशंस डेफिनेटली कहीं एटी सबु जिनस लिखा है जेमिति तमे कपिलेंद्र देवंकर बही जदी देखिबो ताले गीत गोविंद ऊपर गोटे कमेंटरी कपिलेंद्र देव भी लिखिथिले तो सेही सब बही रे भी ही हैड correlated the existence of Jagannath with the existence of Vishnu का सहित कृष्ण का सहित जो माने जो ब्रह्मदान जोड़ा कुआ जाय दी नवगण बर टाइम रे जो सोल ट्रांसफर हुए दैट पर्टिकुलर इज ऑफ नीलमाधव सोल दैट इज द सोल ऑफ कृष्णा हिमसेल्फ तो एठी विभिन्न प्रकार रिलीजन रो इंटरमिंगलिंग अछि फेथ मल्टीपल फेथ ट्रेडिशंस रो भी इंटरमिंगलिंग अछि दैट इज एविडेंट फ्रॉम दीज प्रैक्टिसेस गुड तांत्रिक प्रैक्टिसेस इन्फ्लुएंस्ड द टेंपल रिचुअल्स तांत्रिक प्रैक्टिसेस इन्फ्लुएंस द टेंपल रिचुअल्स ए स्टेटमेंट ठीक हबो कि भूल हबो केमति डिस्कस करबा जगन्नाथंकर जो भोग हुए सेटा फर्स्ट ऑफ ऑल जगन्नाथन को ऑफर करा जाए देन से भोगटा विमला देवी को ऑफर करा जाए बिकॉज जगन्नाथ इज कंसीडर्ड टू बी भैरव एंड विमला देवी इज कंसीडर्ड टू बी भैरवी तो सेति पे तांको ऑफर करा जाए और तांको ऑफर करा हिसला परे ही सेटा महाप्रसाद बोली कंसीडर करा जाए तो दिस काइंड ऑफ मैजिकल थिंग्स और दिस काइंड ऑफ तांत्रिक माने कोन यंत्रज अछि यज्ञस करा होछि देयर इज अ मैजिकल बिलीफ इन द faith of Jagannath तो मैजिकल बिलीफ भी हमरो प्रैक्टिस करा जाउची इन द जगन्नाथ कल्ट एंड दैट इज व्हाई tantric practices are influencing the temple rituals. Yes, some of the temple rituals are there where we practice tantric rituals. This statement is also true. Correct. Just an example. मु गोटे example देली तो से example basis है सबो मंदिर रे प्राय सबो मंदिर रे we see some of the tantric influences there. माने किछिटा तंत्र मंत्र करी की मंदिर rituals को specify करा हेची मंदिर rituals design करा हेची and that statement is also true. Correct. Next, with reference to the decline of Eastern Gangas. एबे Eastern Gangas विषय पे हमें last class रे discuss करथिले कौन discuss करथिले Eastern Gangas कोठी rule करथिले basically the Eastern Gangas began from the श्वेतक मंडल रु से माने begin करथिले which was in the modern day Gajapati district तो ई श्वेतक मंडल रु Eastern Gangas माने rise करथिले and ए दिन सडा हमें last class रे discuss करथिले internal rebellions weakened the kingdom. Yes, during the time of Narasimha Deva IV, correct, Narasimha Deva IV and Bhanudeva IV, there were internal weakness inside the Ganga dynasty, correct. ता माने कोन इंटरनल वीकनेस गंगा डायनेस्टी रे थिला नरसिंह देव 3 टाइम रु ही इंटरनल वीकनेस धीरे धीरे स्टार्ट हेतिला 1300 माने इफ यू सी अराउंड 1325 एडी 1325 1310 परे परे तांकर जनरल वीकनेस डिक्लाइन करबा रो रीजन थिला भितरे ही समस्त वारफेयर करथले टू टेक ओवर द थ्रोन बैटल ऑफ सक्सेशन कंटीन्यूअस चले थिला देन देयर वाज एक्सटर्नल प्रेशर लॉस ऑफ टेरिटरी भी होतला विजयनगर माने सॉरी नॉट विजयनगर दिल्ली सल्तनत वाज राइजिंग देयर तो दिल्ली सल्तनत रो रिपीटेड इन्वेजन्स होतला तो भितरे भी समस्त बहुत ही पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बोली कहा जाए ए टाइम रे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी गोटे आसीथिला व्हिच वाज दिस टाइम बेसिकली ए जो 1325 रु आरंभ करके 1434 एडी पर्यंत देयर वाज ए पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड दैट इज व्हाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द गजपतिस टुक ओवर करेक्ट कपिलेंद्र देव टुक ओवर द थ्रोन डिक्लाइनिंग माने भानुदेव IV वाज द लास्ट नोन पावरफुल रूलर आ तांको हराई की गजपति देव कोन कले थ्रोन ऊपर को पळेले तो थ्रोन नहीं गले he was the minister of the Ganga dynasty and he took over the throne similar concept like the Mauryans रो लास्ट रूलर बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग काहे मारले because they were weak rulers आ आंको लागला जे ये डेफिनेटली से आपको आउट थ्रोन करि परिबे आउट थ्रोन रो बाहर करके रूल कले तो दैट इज व्हाट हैपेंड हियर pressure from the Delhi Sultanate increased. Yes, मु कहली तुमको कौन during the time of Firoz Shah Tughlaq there were repeated invasions on Odisha, correct. Then the Bengal was also going into the Afghans, correct. तो सही अफगान्स हाथ बंगाल पड़े बंगाल साइड भी बहुत सारा अटैक्स देखिबा देन वी आल्सो सी द अटैक्स फ्रॉम द तुगलक डायनेस्टी बेसिकली फिरोज शाह तुगलक टाइम रे भी हमें बहुत सारा अटैक्स देखिबा ओडिसा ऊपर तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट द डायनेस्टी वाज रिप्लेस्ड बाय द गजपति डायनेस्टी Eastern Ganga dynasty was replaced by the Gajapati dynasty. The founder of Gajapati dynasty was Kapilendra Deva. This statement is also correct. By the end of 1434 AD, we see the Ganga dynasty declining and Kapilendra Deva rising with the Gajapati dynasty, the foundation. All of the statements are correct. Right? Next, consider the following statements about temple economy. It is basically a temple economy in the sense is कौन जो हमारा ये जो social religious reform movements होता है सही chapter है we see some kind of temple movements माने social religious reform movements उड़ा का temple रो economy ऊपर कौन impact करता है that is a particular chapter that is covered here
तो ये तीनटा क्वेश्चन रो जदि हम देखबा टेम्पल्स एक्टेड एज सेंटर्स ऑफ लैंड मैनेजमेंट यस दिस इज ट्रू बिकॉज द प्रीस्ट्स ऑफ द टेम्पल वेर ऑफर्ड ए लॉट ऑफ लैंड एटा फर्स्ट जिंस देन सेकंड जिंस कोन जे कोनसी राजा जो कोनसी गॉड को पैट्रोनेज दउथिले सीए मंदिर को बहुत सारा लैंड डोनेट करूथिले तो दैट इज व्हाट टेम्पल्स वेर द हाईएस्ट होल्डर्स ऑफ लैंड करेक्ट तो टेम्पल लैंड बहुत सारा हे जाउतला सब किंग्स माने टेम्पल्स मान को बहुत अधिका लैंड दउतले वे तो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द टेम्पल्स हो कि फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेस्ट कि टेम्पल रो फूड कल्टीवेशन पाई टेम्पल्स रो टेम्पल रे जो भोग प्रसाद जहां भी तैयारी हुए तार जो रोसेवास पाई जति परिया पत्र पाई कि एनी काइंड ऑफ सेगमेंट रे टेम्पल्स को हेल्प करे पे बहुत सारा लैंड डोनेशंस करा होतला तो टेम्पल वाज a center of land management yes this is true they functioned as employers of artisans definitely temples building temple रो building माने धर मान जगन्नाथ मंदिर तैयारी हेला जगन्नाथ मंदिर साइड रे टेम्पल प्रीमाइसेस भितरे बहुत सारा टेम्पल तैयारी हेची ए जो बहुत सारा टेम्पल तैयारी हेची धर मान गोटे नुवा टेम्पल रो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हला तो आर्टिसंस माने एंगेज हेबे क्राफ्ट्समैन माने एंगेज हेबे से माने ही तो कारुकार्य करिवे ना तो दैट काइंड ऑफ employment was given by the temples जेते टेम्पल्स अधिका बढ़िबो सेते अधिका employment to the artisans and craftsmen अरे हां कि नहीं that is also there तो definitely से दिन सरा भी true they had no role in redistribution of resources ए स्टेटमेंट टाको केमती एनालाइज करबा टेम्पल्स मान को पाखरे सबुठो अधिका लैंड अछि सबुठो अधिका कल्टीवेशन भी होछि तापरे टेम्पल्स को अधिका दान भी जाउथबो जेतोले मर्चेंट्स माने अधिका प्रॉफिट करूथबे कि राजा माने अधिका प्रॉफिट कले अधिका टैक्स मिलला से माने टेम्पल्स को डोनेट भी करथले ता सहित लोक माने भी बहुत सारा डोनेशन करछन्ती एबे भी वी सी डोनेशन तो डोनेशन होउची तो एई टाइम रे कोन जदी बाय चांस लोकंकर जेतोले फेमाइन हबो कि लोकंकर जेतोले असुविधा पड़िबो लोकंकर जेतोले मरुडी पड़ि गला कि बन्या हे गला सेतोल को लोक माने खाया को कोठ जिवे मंदिर ही जिवे जेतोले सबडा खाया को मिलेनी लोक माने कोठ जानती मंदिर को जानती काना मंदिर रे प्रसाद बंटन हुए आ से प्रसाद बंटन रु तांकर भोक भी मेंटिबो तो सेत पे लोक मंदिर भी पहुंचंती तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस वाज ए फंक्शन ऑफ द टेम्पल्स जेतोले लोकन कष्ट हबो लोक माने कोठ पहुंचबे जाकी भगवान पार पहुंचबे और डेफिनेटली सेही फेमाइन एंड माने क्रिटिकल कंडीशंस रे टेम्पल ही रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस करथबे तो ये जे लिखुची नो रोल इन रीडिस्ट्रीब्यूशन डेफिनेटली स्टेटमेंट ता कोन हबो फॉल्स बुझबारछ नेक्स्ट ग्रोथ ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट्स कोई सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स these are the two questions of that तो रिगार्डिंग कल्चरल डेवलपमेंट्स अंडर दी गजपति टाइम रे हमें दीटा तीनटा कल्चरल डेवलपमेंट देखिचे कोन देखिचे व्हेन गजपतिज स्टार्टेड रूलिंग सेतबेल को ओडिया लैंग्वेज को स्पेशल प्रेफरेंस दिया गला नहीं कि द ग्रोथ ऑफ ओडिया लिटरेचर and this is evident from the fact that Kapilendra Deva himself has written many of the books in Odia language ta sahita Sarada Sankara Mahabharata was also written during this point of time and that is why he is also known as Adi Kavi ta sahita we also find the Panchasakha tradition during the Gajapatis right तो ए ट्रेडिशन टा भी हमें से टाइम रे ही देखुचे तो अभिनव गीत गोविंद एटा कपिलेंद्र देव निजे लिखिथिले हैला नाम मालिका कपिलेंद्र देव निजे लिखिथिले तो दिस काइंड ऑफ बुक्स आर आल्सो रिटन बाय कपिलेंद्र देव हिमसेल्फ एंड दैट इज व्हाई ही प्रमोटेड द ओडिया लिटरेचर एथिक त हमें जानि छे नाउ ग्रोथ ऑफ वैष्णविज्म यस दी गजपतिस कपिलेंद्र देव हो प्रतापरुद्र हो से माने जगन्नाथ मंदिर भितरे बहुत सारा सिस्टम को इंट्रोड्यूस भी करथिले आ बहुत सारा सिस्टम को प्रमोट भी करथिले आ जगन्नाथ जेहेतु तमरो विष्णु का अवतार तो दे वर आर्डेंट फॉलोअर्स ऑफ वैष्णविज्म आल्सो वी कैन से दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फ्लरिशिंग ऑफ ओडिया लिटरेचर एग्जांपल तो दिल्ली ओडिया लिटरेचर डेफिनेटली फ्लरिश करथिबो कंस्ट्रक्शन ऑफ कोणार्क टेंपल दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स कंस्ट्रक्शन ऑफ कोणार्क टेंपल वाज अंडर लांगोला नरसिंह देव तो दैट इज व्हाई गजपति टाइम रे ऑलरेडी कोणार्क मंदिर एस्टैब्लिश हे सरलाणी सो वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट दिस करेक्ट गुड सब ऑप्शन रे आंसर ए ही अछि तो आराम से मार दवा कथा भी हला सेमती हबनी एबे द क्वेश्चंस विल चेंज हला आई हैड टोल्ड कि मु 20 टा क्वेश्चन करबी बट जेहेतु मो पाखरे आउट सेशन थिला दीटा सेशन थिला तो आई थॉट कि we will discuss some more questions. I'll try to cover 30 questions of this modern history questions and medieval Marathas and all say questions भी हमें नहीं किया आसछु. Now with reference to administration in Odisha under Mughal rule केतला आसिला जेतबेले अकबर complete Odisha को annex कले 1592 and he sent his representative Raja Man Singh to Odisha.
करेक्ट तो एई टाइम रे ओडिसा कंप्लीटली मुगल्स अंडर को जाइतिला आ सेउठू ए क्वेश्चन टा आसीची ठीक एटा सिंह हला आई कैन इरेज बट लिखि देली The Mughal administration in Odisha followed the Mansabdari system. Yes, definitely Mughals manankar sei particular system hi chali thai Mansabdari system. Mansabdari system is the provinces. Some of the lands were given to Mansabs. So ei Mansabdari system re kono the head of the area collection of revenue taxes ei sob dinsa ke bujutule the Mansabs were understanding. Now what you will understand from here is koi doje gote important fact kono how are the Mansabs different from the जागीरदारी सिस्टम ए जो मनसबदारी सिस्टम रे कोन हला जो माने अपॉइंट करा हेले कोन करिया पई रेवेन्यू कलेक्शन करिया पई किबा टैक्सेस कलेक्शन करिया पई किबा तांकर भलो मंद बुझिबा पई तांकू जेतेबेले पेमेंट दिया जाए आइदर कैश फॉर्म रे दिया जाए और एल्स कोन करा जाए दिस पेमेंट कैन आल्सो बी गिवन थ्रू लैंड ग्रांट्स करेक्ट तमाने जो माने मनसब थिले सेही माननकू ही किछिटा लैंड ग्रांट तांको दरमा हिसाब रे दिया गला ए जो दरमा हिसाब रे लैंड ग्रांट दिया गला दीज लैंड्स वर कॉल्ड एज जागीर लैंड्स करेक्ट ए लैंड्स वडा को ही जागीर लैंड्स को गला एंड देन दिस वाज कॉल्ड एज द जागीरदारी सिस्टम ता माने किछिटा मनसब्स व्हेन दे वर रिप्लेस्ड फ्रॉम देयर पोजीशन एट लीस्ट they had some of the lands which were rent free. These rent free lands were called as jagirdari system. ता माने mansabdari system is the superset, jagirdari system is a subset under the mansabdari system which later on becomes a independent system, right? तो ए दिटा दिनस हम जदी बुझिले आप रे कोन हेबा mansabdari system तो डेफिनेटली थिबो मुगल्स मानक टाइम रे तांकर सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन mansabdari system थिला एंड देन ए जो जब्ती सिस्टम थिला दिस जब्ती सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय राजा तोदारमल करेक्ट and this was the land assessment system तो ए सिस्टम भी आसी थिबो जेतो मनसबदारी सिस्टम आसिला लैंड असेसमेंट लैंड रो रेवेन्यू कलेक्शन केमिति करबा केमिति हबो कोन नै से दिन सर डिस्कशन पाई भी जब्ती सिस्टम ही आस्थिबो दैट इज व्हाई राजा मान सिंह हैड कम इन बिकॉज़ ही इंट्रोड्यूस्ड बोथ द सिस्टम्स इनटू ओडिशा आफ्टर 1592 both the statements are true the mughal period saw the complete abolition of the jagirdari system impossible जदी मनसबदारी अछि जागीरदारी थिबो ही थिबो तो डेफिनेटली कंप्लीट एबोलिशन ऑफ जागीरदारी सिस्टम हे परिबनी जो मनसब्स माने पोस्ट हेबे माने ओडिसा को गोटे सेपरेट सुबा तो अकबर का टाइम रे करा है नतला जहांगीर का टाइम रे गोटे सेपरेट सुबा हला आ से सुबेदार अपॉइंट हेले तो सेही सुबेदार जे अपॉइंट हेले तांको अंडर जो मनसब्स माने रहिले से माने को जागीर लैंड मिलिबो तो मनसबदारी एंड जागीरदारी सिस्टम आर इंटीग्रेटेड सिस्टम एरा अलगा हे परिबो नाही दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स क्लियर बढ़िया आगो को नेक्स्ट विथ रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी under the Maratha rule in Odisha consider the following statements now what the Marathas introduced the system of chauth in Odisha Marathas मानकर सबटो इंटरेस्टिंग दिनस होची तांकर दी प्रकार रो टैक्सेशन सिस्टम किबा रेवेन्यू सिस्टम रे तांकर दी प्रकार रो इंपोर्टेंट सेटलमेंट सिस्टम थिला गोटे होची तमरो चौथ माने ही तमे जानि परिबो कोन 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू जहां भी लैंड रो प्रोड्यूस हला करेक्ट ता भितरु 1/4 से माने मराठास को दबा को बाध्य देन सेकंड कोन हे गेला सरदेश मुखी नाउ द कंफ्यूजन इज व्हाट इज चौथ एंड व्हाट इज सरदेश मुखी ता माने कोन इफ ता माने कोन इफ देयर इज अ पर्टिकुलर लैंड व्हिच इज मराठास एंसेस्ट्रल लैंड if you have captured a particular ancestral land of the Marathas and then Marathas माने सेही लैंड ऊपर रेड मारुचंती तो सेठी कोन हबो you will have to जदी से रेड रे Marathas माने जीति गले you will have to pay them two kinds of taxes one is the chauth तो तमे दबो ही ता सहित जेहेतु सेटा Marathas मानकर ancestral property you will pay a surcharge also माने धर मानकर जेमति हमें additional cess पे करते 2% की 3% की whatever it is तो सेही हिसाब रे 1/4 लैंड प्रोड्यूस तो दबो ता सहित 2% surcharge 2% is an example हला don't take it hardly 5% हो कि 10% हो आउ किछटा additional amount गोटे additional surcharge निया जाए because you have occupied the ancestral property of the Marathas that is where ता माने सरदेश मुखी कोठी apply हे परिबो wherever there is an ancestral property of the Marathas करेक्ट ता माने मराठा जद कहबे जे एटा हमर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थिला आगु मराठास माने रूल करूथले एबे तमे सेथरे कब्जा करछ जोटा कि मुगल्स मानक संगे मराठास माने छत्रपति शिवाजी कर बेसिक फाइटिंग थिला दैट द एक्सेप्टेंस ऑफ सरदेश मुखी राइट तो सेही दिन से हम देखिबा ना व्हेन बहादुर शाह 1 कम्स इन माने आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब ही गिव्स चौथ बट ही डज नॉट गिव सरदेश मुखी सेटा ही मराठास मन को बेसी अपसेट करूथबो तो एबे देखिबा
ओडिशा रे जतो मराठास माने रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करबे केवल चौथ ही करबे सरदेशमुखी करबेनी बिकॉज़ ओडिशा लैंड इज नॉट देयर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तो केवल चौथ ही इंट्रोड्यूस करबे सरदेशमुखी इंट्रोड्यूस करि परिबानी तो सेति पे दिस स्टेटमेंट इज Cuttack was an important administrative center under the Marathas. Yes, because during the time of Gajapatis मानंक टाइम रे ही परवर्ती समय रे कटक टाकू कैपिटल करा हबो सेठी ही बारवाटी फोर्ट तयारी करा हबो धन्य काटक माने काटक जोटा बेसिकली इट इज ए फोर्ट तो ए जो फोर्ट ता तयारी करा जाए तो सेटा ही तमरो कटक है अभिनव वाराणसी काटक जोटा कह जिवो दैट बिकम्स द कटक एंड ए कटक टा गजपति डायनेस्टी रु ही पॉपुलर हे जिवो ता माने बाय द टाइम ऑफ 15th सेंचुरी एडी कटकटा फेमस हे गला तो एबे जतले मराठास माने आसिलेनी करेक्ट मराठास माने जतले व्हेन मराठास अराइव इन 17th 18th सेंचुरी तो डेफिनेटली से तो कटक इज इंपोर्टेंट कटक रे ही सुबेदारंगर सेंटर थिबो एटा तो किछि भाबिबार भी नाही द मराठास एनकरेज मैरीटाइम ट्रेड थ्रू द पोर्ट ऑफ बालेश्वर से टाइम रे कोन हला व्हेन द मराठास टुक कंट्रोल द मराठास फोकस्ड मोर ऑन पिलग्रिम टैक्स सेटा ही लास्ट क्लास रे हम डिस्कस करथले द मराठास फोकस्ड मोर ऑन पिलग्रिम टैक्स आ ए पिलग्रिम टैक्स में समाने जगन्नाथ मंदिर रे जो रथ यात्रा हुए ताकू प्रमोट करिया को चाहूतले आ सेउटू पिलग्रिम टैक्स अधिका कलेक्ट करूतले पोर्ट ऑफ बालेश्वर सेतोल को कोन गोरे सिल्टिंग फेज को पळेला ता माने कोन से टाइम रे बहुत सारा सिल्ट डिपॉजिट होतला ऑन द कोस्ट ऑफ बालेश्वर एंड दैट इज व्हाई ए पोर्ट टू ट्रेड ता डिक्लाइन करि गला ड्यूरिंग दी 18th सेंचुरी एडी ए पोर्ट टू ट्रेड ता डिक्लाइन करा ग्रेजुअली एंड ए जो डिक्लाइन कला मराठास माने भी डेफिनेटली सिटी मैरिटाइम एक्टिविटीज करिया को बेसी इंटरेस्टेड नथिबे द मराठास वर मोर इंटरेस्टेड इन कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू तो अलीवर्दी खान संगर तांगर जो एग्रीमेंट हेतला जे रेवेन्यू हमें पाइबा दैट पर्टिकुलर थिंग इज देयर तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स राइट Question number 23 assertion and reasoning type the Marathas collected pilgrim tax eta hi just abhi hame discuss kale yes this statement is true then the Jagannath temple was an important source of revenue for the Marathas this statement is also true mane the reason is also true so assertion is true and reason is the correct explanation simple question thila a विषय टिक आगरो डिस्कस करछि से पे मु डायरेक्टली आंसर क्लिक कली if you are not able to understand कि जदी डाउट हुए ताहले let me know in the comment section correct now here we have a interesting discussion Piker rebellion विषय डिस्कस करिबा Piker rebellion 1817 correct important time important phase for the Indians for the Odisha people also so that is why we will discuss pranam it took place against British revenue policies Piker rebellion बहुत सारा different policies जोगु हेइथिला Piker rebellion ता केवल रेवेन्यू पॉलिसीज पय हेइ नथिला आ रेवेन्यूज पॉलिसीज सहित इंपोर्टेंटली को दिनस पय हेइथिला if we are to understand Piker rebellion तो समस्त जानि ही थिबो ना Piker rebellion is an important section तब Piker rebellion कथा जदी हम डिस्कस करबा ताले इंपोर्टेंट रेवेन्यू सेक्शन रे हेतिला ना कोन पे हेतिला यस फुल्ली नुहा कहउछ ठीक डिस्कस करबा देखिबा कोन होउछ हला इट टुक प्लेस अगेंस्ट ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसीज ता माने कोन काहे की इंपोर्टेंटली हेतला बक्सी जगबंधु काहे की फाइट कले तार भी इंटरेस्टिंग स्टोरी अछि ता माने जयराज गुरु आगरो फाइट करि सारथिले आ से दंड पाई सारथिले ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जतबेले ओडिसा जाउतला सेतबेले जयराज गुरु फाइट करि सारथिले एंड बाय द टाइम ऑफ 1806 ही वाज हैंग टू डेथ तो 80 सरी गला बक्सी जगबंधु 1817 रे काहे की रिवोल्ट कले बक्सी जगबंधु 1817 रे एथ में रिवोल्ट कले बिकॉज़ बक्सी जगबंधु कोन थिले पाइक थिले now what are the pikers these pikers are warrior community correct ए माने कोन warriors तो warrior community माने कोन they helped the kings in raiding other kingdoms correct ए माने अलगा अलगा किंगडम्स को रेड करे पे हेल्प करथले तो आंकु जते अलगा किंगडम्स को हेल्प करा होतला एमान को भी से सेम दिनस होतला माने जेमिति मनसबदारी एंड जागीरदारी सिस्टम कथा होचे सेमिति भी एई सेम दिनस द पाइकर्स वर पेड the pikers were paid through rent free lands correct तो ये पाइकर्स मानकर लीडर्स मानकू रेंट फ्री लैंड्स मिलतला जोथरी को चाष बास करके से आराम से रही पारथले ताय इनडायरेक्टली अंडर द किंग द पाइकर्स वर इंपोर्टेंट कमांडर इन चीफ्स कहि परबा इफ ए पर्टिकुलर पाइकर कम्युनिटी इज हेल्पिंग द किंग मोर एंड मोर तो किंग ताकू सेमती लैंड दे अधिका prestige देबे तो the pikers also held an important position and prestige in the society बक्सी जगबंधु को अंडर रे चारिटा important places थिला करेक्ट रोरंग
लेम्बाई 24 खुद एमि चारिटा इंपोर्टेंट locations over there under बक्सी जगबंधु ए चारिटा इंपोर्टेंट लोकेशंस वर टेकन बाय द ब्रिटिशर्स तामाने ब्रिटिशर्स को हेल्प करा हैतला ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेकंड एंग्लो मराठा वॉर ब्रिटिशर्स मानन को ओडिसा रो रूलर्स माने एंड पाइकर्स माने ए माने हेल्प करथिले कोन पई टू क्रिएट अ सेंट्रल रूट फ्रॉम कलकत्ता टू मद्रास तो ए दिन सरो सेंट्रल रूट पे ओडिसा लोक माने हेल्प करथिले मराठास वेर वेरी माने मराठास वर वेरी स्केप्टिकल आउट ऑफ द ब्रिटिशर्स तो मराठास और ब्रिटिशर्स मान को रेगुलर बैटल होतला तो इन ऑर्डर टू डिफीट द मराठास ब्रिटिशर्स माने ओडिसा रूलर्स मान को हेल्प मागितले आ एई हेल्प करिथिबा जगु ब्रिटिशर्स माने कहथिले जेतो आमे मराठास मान को माने जीति जिबा सेतला आमे तुमको एई जगह वाडा को आउथरे दे दबा तो एई आसारे से माने बसितले बट बाय द टाइम ऑफ 1817 एमिति किछि तांको मिलिला नाही तापरे ब्रिटिशर्स माने काउडी सिस्टम को हटे की नुआ करेंसी सिस्टम इंट्रोड्यूस कले लोक माने भी हैरान होतले देयर वेर रिजेंटमेंट अमंग द पीपल एंड दैट इज व्हाई 1817 रे एटा स्टार्ट हला तो इन एंड आउट आमे कहि परिबा जे यस ड्यू टू द रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स द बैटल वाज देयर इट बिगन इन खुर्दा रीजन एटा तो डेफिनेटली ट्रू बिकॉज़ द पाइकर रेबेलियन बिगन इन खुर्दा रीजन सेट में खुर्दा रेबेलियन भी कहै इट वाज फुल्ली सक्सेसफुल इन ओवरथ्रोइंग द ब्रिटिश रूल इन ओडिशा ए स्टेटमेंट तो देखि कि डायरेक्टली ही फॉल्स करबा काहे ना ब्रिटिश रूल ओडिसा रे कंटिन्यू कला and they were not fully successful no doubt the Piker rebellion was an important battle because currently mane in that particular situation 1 to 2 years पर्यंत the Britishers were not able to control the Piker rebellion that kind of devastating battle was thrown out by बक्सी जगबंधु right तो सेति पे पूरा तो हैरान करि देथिले किंतु completely eradicate कर देथिले कि नहीं right now question number 25 is also an assertion and reasoning question Odisha was the last province to be formed on linguistic basis false 1936 first province to be formed on the linguistic basis ta mane kona assertion is false assertion jodi false a is incorrect but as it is correct edi goti hi deichi na correct jodi diya janda a is incorrect r is incorrect ताले we would have thought reason पड़ी था but A is incorrect এটা তো definite तो A is incorrect कोटी ही ऑप्शन रही still then the movement for separate Odisha उत्कल सम्मेलनी established by मधुसूदन दास सेति में reason ता ठीक अछि assertion ता भूल अछि easy अरे generally easy हला माने assertion and reasoning type of questions देखि कि पिला माने भाबते जे बहुत पढिया को पड़िबो आ सेति पई आमे कोन माने skip करंती तो that is why I am saying कि कोन good तो सेट पे I am saying कि if you go through the question ताले ठीके जदी माइंड भी जानिचो ठीके फंडामेंटल भी जानिचो ताले आंसर ठीक हे जिवो क्वेश्चन देखि कि डरिवार आवश्यकता किछि नाही आ तापरे एमती क्वेश्चन आसीबो भी नाही माने एबे इन द रिसेंट ट्रेंड ओडिसा हिस्ट्री रो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पका होची बेसी स्टेटमेंट बेस्ड आसु नाही मे बी दिस ईयर आसी पारे बिकॉज़ लास्ट ईयर पूरा एंटायरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आस्तला 17 क्वेश्चन आस्तला ओडिसा हिस्ट्री रो लास्ट ईयर ओपीएससी प्रीलिम्स रे पूरा ऑब्जेक्टिव पैटर्न रे आस्तला ए वर्ष हुए तो स्टेटमेंट क्वेश्चन देई पारे दैट इज व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन बोथ स्टेटमेंट क्वेश्चंस मु करि देली नेक्स्ट जेतबे नेक्स्ट सेशन मोर हबो मु ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नै के आसीबी इजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आउ बहुत ही factual questions that also we will bring this is the analytical part एडा कर दबा then arrange the following chronological order रे सजेबा केमिति formation of Odisha as a separate province ठीक पाइको रेबेलियन ठीक एतिक तो हम जानि छी then non cooperation movement in Odisha non cooperation movement start ही हला 1920 रे ए ओडिसा आसला को 1920 21 हमें 20 धरो कि 21 बेसिकली हला बट यू कैन कंसीडर दिस 20 माने जेमति नेशनल मूवमेंट सहित को अलाइन करबा पई 1920 ही मन रखो एबे सीक्वेंशियल सजे देबा कोन 2 is first then comes what 2 3 1 clear easy question खाली तुमको जाना थिबार अछि if you know the timeline then you will definitely answer this timeline ता खाली जाना थिबार अछि consider the following statements about Utkal Sammilani was founded by Madhusudan Das ऑफिस कटक रे थिला ता पूर्वरु गोटे इंटरेस्टिंग स्टोरी कहि दोची कोन ए जो 1903 रे एस्टैब्लिशमेंट हला अप्रैल रे गोटे मीटिंग हेतिला गंजाम रे तो सेति पे बेले बेले किछिटा जगह तुम क्वेश्चन देखिबो करेक्ट कोनटा जदि फर्स्ट मीटिंग ऑफ उत्कल सम्मेलन कोठी हेतिला करेक्ट कोठी हेतिला तो फर्स्ट मीटिंग ता माने प्रिकर्सर उत्कल सम्मेलन फॉर्मेशन हबा पूर्वरु ऑफिशियली उत्कल सम्मेलन फॉर्मेशन हेतिला कटक रे
बट देन ता फॉर्मेशन हवा पूर्वरु बरहमपुर रे गोटे इंटरेस्टिंग मीटिंग हेतला मधुसूदन दास करथिले आ बहुत सारे लीडर्स को इकट्ठा करथिले देन दे मूव फॉरवर्ड टू कटक एंड देयर उत्कल सम्मेलन वाज फॉर्मेट तो सेते कोन किछरा क्वेश्चंस रे दिया हेता है ऑब्जेक्टिवली द फर्स्ट द वेरी फर्स्ट मीटिंग ऑफ उत्कल सम्मेलन आ किछरा ऑप्शन रे बरहमपुर भी दिया हेता राइट तो सेटा अनऑफिशियल मीटिंग ऑफिशियल मीटिंग रा कोठी हबो ऑफिशियल मीटिंग रा डिसेंबर रे हबो डिसेंबर 1903 रे द ऑफिशियल मीटिंग टेक्स प्लेस इन कटक right next कौन देख दवा it was founded in 1903 at Cuttack this statement is true official meeting its primary objective was unifying Odia speaking people definitely 1866 ର famine ପରେ the primary objective of this group formation was the unification of Odia people ପାଇଁ ହିଁ ତାଙ୍କର primary objective ଥିଲା and that is why it initially functioned as a militant revolutionary body मिलिटेंट रिवोल्यूशनरी बॉडी नथिला काहेकि सेमाने कांग्रेस रो पद चिन्ह रे चालुथिले पिटिशंस प्रेयर्स एई सब दिनस रे ही सेमाने इनिशियली तांकर मूवमेंट ता स्टार्ट करैथिले राइट तो सेति पे इनिशियली मिलिटेंट रिवोल्यूशनरी बॉडी एटा हबो नाही माने दिस वाज नॉट ए बॉडी सिमिलर टू द एचएसआर से तो सिमिलर नथिला दैट इज व्हाई 1 and 2 ओनली क्लियर गुड देन नेक्स्ट Consider the following statements about formation of Odisha province in 1936. ठीक है formation of Odisha province देखि दबा the most leading माने role of formation of Odisha province Madhusudan Das no doubt had started but Krishna Chandra Gajapati had played an important role Gopal Das was also there and he also played an important role तो एमिति important leaders मानकर ना तुमको मने थाई पारे right then good next it was separated from Bihar and Odisha province Odisha province ru separate Odisha बोली किछि province ही नथिला कोन province थिला मद्रास presidency थिला अरे बुझ परछ ना नहीं मद्रास presidency थिला आ उडा कोन थिला consider the following statements which of the following statement is correct okay it was separated from Bihar and Odisha province Madras थिला Bengal थिला and central province थिला correct Madras थिला Bengal थिला and central province थिला and Odisha was there in between all of these provinces correct तो सेतिबाई फर्स्ट स्टेटमेंट ता कोन हे जिवो बोल गंजाम was fully included in Odisha in 1936 गंजाम completely included हेई नथिला this was an interesting fact that गंजाम completely include हेई नथिला परवर्ती समय रे सेटा include हेई की आसीबो if you see the entire formation ताले complete inclusion was not there and for that particular point many of the leaders had fought अब बहुत सारा further movements भी हेकी आसीबो it was the first province formed solely on linguistic basis in British India this statement is true correct good but I don't believe that there is answer it actually basically कौन हवा कथा which of the following statements are not correct हवा कथा correct the question is somewhat ambiguous in nature the option is not there right so leave that question we will discuss in next class एक question को पे छाड़ देता 2 and 3 maybe 2 and 3 fully included in Odisha in some kinds Ganjam was included some parts of there तो हुई तो है तो पारे 2 and 3 option है पारे but if you see completely included ताले सही दिन सरो segment ता we will have to 3 हला तो only 3 होगा कथा but there is no option तो leave that question in the next session I'll clear the ambiguity here तो question कौन होगा कथा we will see in the next session right next question number 29 with reference to British administration in Odisha किछटा points हमें देखिबा कौन Odisha was initially placed under the Bengal presidency initially Bengal presidency under रे रखा हेई थिला ना नाही Odisha सेमिति भी बहुत सारा segment रे divide हेतिला but आबे जदी कहबा जे major segment में भी पचारुची जे major segment of Odisha को presidency under रे थिला yes major segment of Odisha was under the Bengal presidency that is true किछिटा segment central province रे थिला किछिटा segment मद्रास रे अछि जेमति तमरो कलिंग पार्ट कलिंग ओडिसा जोटा तमरो पार्ट कहउचे जे हमर मालकानगिरी माने मालकानगिरी तो कोरापुट नवरंगपुर पर किछिटा पार्ट मद्रास रे थिला किछिटा पार्ट सेंट्रल थिला बट मेजॉरिटी पार्ट ऑफ Odisha was there under the Bengal presidency सेटमेंट स्टेटमेंट है ठीक permanent settlement was introduced in Odisha in 1804 permanent settlement Odisha रे इंट्रोड्यूस हेइथिला इन 1804 डेफिनेटली ए स्टेटमेंट भी ट्रू हेता पर काहे कि नो डाउट परमानेंट सेटलमेंट 1793 रे बंगाल रे देखिया को मिलिला बट ओडिशा वाज नॉट अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल ओडिशा ब्रिटिश कंट्रोल रे केबे आसीबो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर परे तो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 रे जेतले साइन हबो सेतबेले को ही ओडिशा रे टेरिटरीज माने
ब्रिटिशर अंडर को आसीबे तो डेफिनेटली 1804 रे जेते ब्रिटिशर्स ओडिसा को कंट्रोल करिवे आ एडमिनिस्ट्रेशन को मूव करिवे सेतो को परमानेंट सेटलमेंट ता इंट्रोड्यूस हेतिबो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो salt production was heavily regulated under British rule. Heavily regulated salt monopoly. Correct? The Britishers created salt monopoly. तमारे salt manufacture करिया को देले ही नहीं. Heavily regulated नुहे. Completely नहीं ही गले. तो salt manufacturer rights was snatched away by the Odishans. That is what created the माने resentment ना यही resentment जोगु ही ओडिशा बहुत हैरान हला ता माने जो माने कोस्टल बेल्ट रे रहउतले सॉल्ट मैन्युफैक्चर करिवार जहार राइट थिला सेमान बागुर से राइट ता नहीं गले करेंसी इंट्रोड्यूस करा हला तो एई जो सेगमेंट रे हमें पढो जे फेमाइन ऑफ 1866 रे कोन दिनस हेतिला एई सॉल्ट मोनोपोली जोगु ही बहुत सारा लोक बेरोजगार हे गेले बहुत सारा लोकंकर माने जीविका छड़ाई नहीं जायथिले ब्रिटिशर्स माने तो हेवीली रेगुलेटेड कहबाने कोन कहबा कंप्लीटली टेकन अवे करेक्ट ब्रिटिशर्स क्रिएटेड सॉल्ट मोनोपोली सबुआडे से सेम दिनस तो सेति पई ही तो तमरो दांडी मार्च हेतला ना with reference to the Satyavadi movement in Odisha it was associated with Gopabandhu Das. Yes, this is true. The Satyavadi movement associated with Gopabandhu Das with the inauguration of Satyavadi Banavidyalaya forest schools जो थे कि गोपबंधु दास चेष्टा कले जे द नेशनल लीडर्स जो माने फर्दर फ्यूचर को आसीबे सेमान को आमे हमर इंडिया रो कल्चर इंडिया रो सेगमेंट सब दिन सब भी पढेबा त सहित इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को भी नै के आसीबा एजुकेशन भी प्रमोट करबा ता सहित इंडिया रो कल्चर एंड एजुकेशन को भी ताको फॉरवर्ड नै के जिबा त माने इंडिया रो एंशिएंट कल्चर रिचुअल प्रैक्टिसेस को भी आगो को नै जिबा एजुकेशन भी आगो को नै के जिबा एंड सेमिति करिकि वी विल बिल्ड ए न्यू स्कूल तो ए जो फॉरेस्ट स्कूल होतला एथिरे एंशिएंट culture of Odisha was also there, education was also there, scientific education was also there, and by 1909 this movement was started. This is also correct. It promoted nationalist education through Satyavadi Banavidyalaya. This is also correct. It opposed participation in the Indian National Congress. Definitely, emane kon hele? In order to take part in the Indian National Congress, this kind of education was being provided. Take part, तमाने कांग्रेस सहित मर्ज हवा पई, कांग्रेस को आहुरी सपोर्ट दवा पई ही एमाने आसिथिले. आंसर clear. And with this, we are coming to an end of the Odisha history discussion. I had tried a lot to put out many of the variety of questions. माने ancient रो नेकी modern पर्यंत चेष्टा कले. मु एमिति कोनी जे सब क्वेश्चन हे गला. There are minimum hundreds of questions from Odisha history and we will try to discuss a lot of these questions in the further sessions also. ता सहित we will also try to bring out Indian history part एपर्यंत सेटा कवर हेनी. तो all of my powerhouse series रे मु cultural affairs, art and culture, Odisha history ए सब दिनस करिछि. Odisha history तो एबे गोटे सेगमेंट रे सरेली एनालिटिकल पार्ट ता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन नेक्स्ट केबे सेशन रे नै के आसीबी. आ जदि तुमको इंडियन हिस्ट्री रे किछटा इंपोर्टेंट सेगमेंट रे दरकार क्वेश्चन ताले मते कहबो. मॉडर्न हिस्ट्री हैज बीन डिस्कस्ड इन द वेदांत सीरीज. मॉडर्न हिस्ट्री तो मु सारी देछि. We will also bring some of the medieval history questions. तमन medieval history, विजयनगर empire एही ऊपर जो क्वेश्चन थोड़ा के रिपीटेडली आसुची विजयनगर empire बहामनी किंगडम से क्वेश्चन थोड़ा के रिपीटेडली आछि तो ता प्रति बहुत फियर अछि जो मन को भितरे. I will definitely bring out those questions also. Right? ता सहित I have always been saying जदि आउ किछि सेपरेट सेगमेंट दरकार स्पेशल इंपोर्टेंस किछटा टॉपिक्स को दरकार then let me know, we will try to bring out that also. By all of this we will say on like, share and subscribe the OS channel. Baki we will see you in the next session. Thank you so much for being there. I hope you enjoyed this session. Correct? Let's move.